uh, could not be connected from the internet, so there was no internet. I So used to, as you know, Arushi, I have created a permanent link ID. Yes, the same link every day is there. Even it is already scheduled in the Google Calendar. You will get this link easily. You can save this link. I will not change. If there is a change in the timing, then and then only I will change, and I inform in the WhatsApp group. Yes, I would like to ask अर्नव खंडियाल. अर्नव क्या है वो, किधर गया हो, इतने नाम चेंज हो. अर्नव खंडियाल, yes, can you tell me what you learned in the previous period? Yes, sir. Sir, I learned many natural calamity or disaster like earthquake, floods, volcanoes, drought, tsunami, and I understand that on 26 January 2001, people of India experienced on earthquake of high intensity at Kutch of Gujarat, and I understand that what is earthquake, and I understand that also what we have to do when there is a earthquake. That's good, Arnav Khandial. I'm happy to hear from you. And now I would like to give chance to Srishti Patil. सृष्टि पाटिल कैमरा बंद नहीं करेगी. सृष्टि पाटिल, please tell me what you learned in the previous period. I have learned prayer चालू prayer क्या बोली, मुझे अभी तक सुनाई नहीं दिया है. सृष्टि पाटिल, आपने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं सुना है अभी तक. आपको लास्ट पीरियड में आपने क्या सुना था, आपको क्या समझ में आया, आप हिंदी में भी बता सकती हैं. सर एक लाइन बता सकती हो? लाइन सर बोलो, मैं सुन रहा हूँ. मैं हिंदी में बोलूं क्या? बोलो ना. मुझे आप मेरे साथ बोलो. आपको जितना समझ में आया, जितना याद रहा है, उतना ही बोलो. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार रिपीट करूंगा और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो क्या फायदा है पढ़ाने का. मुझे पता और एक बार रिपीट करो. हाँ बोलो सर, आप और एक बार रिपीट करो और मैं आंसर दूंगा. तो पर मेरे पूरे 40 मिनट में आपको 4 वर्ड भी याद नहीं लास्ट पीरियड में क्या पढ़ा था. त्रिव्या जरा बताना, मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट पीरियड में. अलग अलग क्लैमिटीज बताई थी आपने, और ड्रॉट्स क्या होता है, फ्लड क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ाई थी. ओके, तो आपको कौन सी चीज अच्छी समझ में आई, ये जरा बताना मुझे. फ्लड. फ्लड मतलब क्या होता है, बताओ. बाढ़. बाढ़ आती. कहाँ पे देखा आपने? इन केदारनाथ फिल्म. फिल्म में देखी आपने. वेरी गुड. तो आपको नॉलेज को कोरिलेट करना चाहिए. आपने कहीं न कहीं ये चीजें देखी है, एक्सपीरियंस किया है, आपको पता है ये सारी चीजें. फिर भी आप जो हमारे अगल में, बगल में, आगे पीछे, ऊपर नीचे, शहरों में, गांवों में, टीवी में, न्यूज़पेपर में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बोलते नहीं है और लिखते नहीं है. बहुत बार सुनते हैं बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, ये हो गया, वो हो गया,
और आपने उसको देखा भी होगा बहुत जगह पे, सुना भी होगा, समझने की कोशिश भी की होगी, बट उसके बारे में हम लिखते नहीं हैं और बोलते नहीं हैं. Anyhow, I'm just showing you once again here in the shortest way. I hope you can see and read as well as. Now first I will explain it. I hope it is visible to one and all. Let me increase the font so that it will be readable. I hope it is readable. Yes, Trivya, can you read this first point? Yes, sir. Natural calamities are due to unpredictable changes in nature that are beyond human control. Very good. Second point. Natural calamities cause large-scale destruction of life and property. Very Earthquakes good. and tsunamis result from movement under the earth's crust. Many people die and are re Rendered. homeless during such disaster. Okay, well tried, Trivya Gokhale. Dear children, I am reading one-to-one line and explaining it. Please try to understand, and I will ask any child, please tell me what you understand. In this chapter, we are learning about the natural calamities, the calamities that occur due to unpredictable changes in nature that are beyond human control. That is not in our control. It happen anytime. Like example, yesterday the rain came. Suddenly, when you are sleeping, you might have slept because rain came at 11 o'clock. So suddenly the rain came. We did not call, I did not say to the rain, please stop. Rain can come anytime. So this is a natural calamity. But if a normal rain is there, then there is no problem. If there is a heavy rain, so definitely there will be a floods like situation. Natural calamities cause large-scale distraction of life and property. What is meant by the distraction? That is in large scale. When a heavy rain is there, that times many people can float in the water and their houses will float in the water, their houses will collapse, they will damage. So a lot of money will be disturbed, a lot of money will be wasted. Earthquake and tsunamis result from movement under the earth crust. As you know, we are living on the earth, and when there is a movement in the earth surface, that time the earthquake occurs. Many people die and are rendered homeless during such disaster. Yeah, we might have heard, you might have heard in the TV newspaper that people are died because of earthquake and they lose their homes too. So the short questions I have understanding with the pictures. If I ask you what is an earthquake? An earthquake is a sudden shaking of ground caused by movement of vibration deep inside earth. Earthquakes can be mild or severe. Means sometimes earthquake may be just for few seconds, 1 2 3 seconds. Sometimes it may be 7 to 8 seconds also. In some earthquake there is no harm at all, but in some earthquakes there may be the collapse of building, even the you can see the lines on the road, and everywhere people disturb and people may die. So what is an earthquake? Earthquake is a sudden shaking of ground caused by movement or the vibration of deep inside the earth. Inside the earth, some parts is moved, and because of that, the earth crust is moved. And that I am going to show you the earth crust also. Now, dear children, here are the natural disaster. So you should know these disaster. First, it's tsunami. One by one, I will explain you tsunami. As you know, the high rise waves of the water are coming on the land. That is called as the tsunami. Earthquake, as we discussed. Landslide, when there is a heavy rain.
The people who are living near the mountains, that mountain parts is collapsed, that is called as the landslide. Then the lightning, the thunder, as you frighten, mama, bijli chamak gayi, that is the lightning. Then volcanic eruption, this is also another natural disaster. Volcanic eruption, that is a red color, orange color lava is coming from the earth, that is volcanic eruption. Then the cyclone, that is the heavy wind. Then the tornado, here is the air is turning around at one place. And the forest fire, you might have read and listened that sometimes the forest start burning and people are trying to save the forest. A lot of wild animals died because of the forest fire. So these are Sir, I natural didn't calamities. understand the meaning of tornado. Yes, tornado that I will explain you once again, and I will show the video also. Tornado, you can see the heavy wind, but that wind you can see in the picture at one place, the wind is turning, making the circle like merry-go-round. Okay, it's turned at one place, and because of that, the small houses, even some buildings collapse. It's like a heavy wind, जोर की हवा, लेकिन वो एक ही जगह पे ज्यादा देर तक घूमती है, and because of that, lot of human life and property may be damaged. So these are the natural calamities. Natural disaster is a terrible event that is caused by the forces of nature and bring with it destruction, pain and suffering. जब natural disaster होता है, definitely each and every human being, even all the living organism, disturb, like animals also disturb. And what are the natural disaster? Flood, when the heavy rain is there, the flood situation. Earthquake, the hurricane, here is also again the related to the wind. Lightning, that is the thundering lightning in the sky. Tsunami, volcanoes, droughts, that is the less rainfall, and forest fire. So this work is given to you. You will write 4 to 5 lines about these natural calamities with the photo or the pictures. It is easily available in the market also, or you can collect it from the newspaper, so that you will remember for a longer period. How do earthquake affect the earth and its people? Suppose, please mute yourself. किसका mic on है? Please mute yourself. How do earthquakes affect the earth and its people? One information is given in your textbook, that is on 26 January 2001. An earthquake occurred in the Bhuj district of Kutch area in Gujarat. When there is an earthquake, what the people suffer, how the people suffer. The severe earthquake caused collapse of buildings and bridges, buying everything under the earth. When there is an earthquake, all the buildings collapse. But the building which is strong, that building may not collapse, but it may be have the cracks on the walls. Earthquake in hilly area can cause the landslide. If earthquake is near the hilly area, there might be a landslide. So many people may die. Many people die and are rendered homeless during the earthquake. When there is an earthquake, the people may lose their home and some people may die. You might have heard this year also there was a landslide near Solapur, Kolhapur, and in the Konkani area, Raigad, Sindhudurg area. Every year there is landslide because of heavy rain. Now you can see this is the earth. Earth is look like as a ball. It is called as a globe. When we see inside the earth, when we dig the earth surface, so the different parts you can see, cross section of the earth, the outer part where the soil is there, where we are living, that is called as the crust. Inside the crust, that is the mantle is there, and that orange color is there, that is the molten outer core, and inside, in the deep inside, there is a solid inner core, and from this solid inner core the lava is coming out.
that is called as the volcano, volcanic eruption. उस अर्थ के पेट में ऐसा गरम गरम ऑरेंज कलर का जूस होता है, that is in hot, very very hot. As soon as that volcano erupt, जैसे ही वो वोल्केनो बाहर आता है तो उसका स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है. इफ यू वाचिंग द डिस्कवरी चैनल और नेशनल जियोग्राफिक चैनल, यू कैन सी दिस वोल्केनिक इरप्शन, और वहाँ पे वो साइंटिस्ट जाते हैं और उसका स्टडी भी करते हैं. प्लीज वॉच द जियोग्राफिक चैनल और डिस्कवरी चैनल. The outermost layer of earth called the crust consists of hot rocks called the mantle. अभी ये अर्थ के बारे में बता रहा हूँ, उसको मैंटल बोलते हैं, आउटर पार्ट को. द कोर इज द इंडरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे अंदर का जो कोर बोलते हैं. इट इज मेड अप ऑफ हॉट मॉल्टन मटेरियल्स. हॉट होता है बहुत, जस्ट आई टोल्ड यू. द कोर इज नॉट इन स्टेबल स्टेट. द इनर कोर इज नॉट स्टेबल, ऑलवेज मूव. A lot of movement is going on inside the earth, and the moving land masses sometimes bump against each other, and these bumps make land shake, resulting in the earthquake. जो अंदर का hot liquid है, जो core है, वो movement करता है, and because of this movement the earth shake. इसीलिए अर्थ क्या हो जाती है, मूव करती है, या फिर volcanic eruption हो जाता है. Now next, what should you do when there is an earthquake? This one also I discussed in earlier period. When there is an earthquake, as soon as you hear somebody saying earthquake, क्या हो रहा है, धरती हिल रही है, what is your prime duty? We must run out of the building and move to an open area. The first prior most, you have to run out in the open area. But when you are living the first floor, second floor, third floor, if you are living on 7th, 8th, 9th, 10th floor, it will take a lot of time to come down. So at that situation, stay away from electric poles and the trees. If you are on the ground, you can stay away. Take refuge under a table to protect ourselves from falling objects. So the objects, whatever objects are there in your house, they may fall on you. So better you have to refuse them. You have to stay away, and you have to sit under the table as it is shown in the picture. We should not enter any building even after the earthquake stop. Yes, as soon as the earthquake is stopped, even though we should not enter in the building, because there may be a cracks in the wall. Building may collapse after some times. So we have to inspect it. We have to observe it carefully whether the building is safe or not. Then only you have to enter. There is always the danger of damage proper portions falling later. Yes, because of earthquake, the damaged portion may be fall after some times. So these precautions you have to take out. What does the government do when a disaster strike? When there is a heavy rain, when there is a landslide, what the government or the disaster people are doing? You can see they are bringing the hospitals to the people. They are bringing the vehicles, ambulance. They are having the rescue or operating tools. उनके पास ऐसे tools होते हैं जो आपको निकालने में मदद करते हैं. And they make the temporary shelter immediately for the people for their relief. The Indian Armed Forces are trained to help in difficult situations. Most of your parents are working in Indian Army or defense sectors. They are well trained in this situation, such types of situation. They were trained so they can help immediately. They drop food packets, cloth, water packets, medicine in the affected areas. Sometimes people may not get proper food and water. That time they serve the food packets and water to the affected area people. The Red Cross Society supplies urgent medical relief, as government also sending the immediate medical relief. NCC help the people affected at the disaster times. If you join the NCC in class 8, then they will train you how to help the people. FAO, ILO, WHO, NGOs are help at the time of disaster. These are the NGOs, these are the non-government organizations, these are the big organizations
which are helping for the people for the relief. So, We one deal with the disaster. We'll discuss afterward. Please wait. How should one deal with disaster? किसी जगह पे डिजास्टर हो गया, हाउ वी हैव टू डील, हमें उससे कैसे डील करना चाहिए. What is your prime duty? Keep important phone numbers. Now this is another assignment for you. You should have the all important numbers, phone numbers, contact number, address. Keep a bag that contain a torch, pair of clothes and non-perishable food items always ready. आपको ये जो माउंटेन पे जाने वाले लेसन में मैंने पढ़ाया था, important things should be ready. Within 1 minute you should be ready. तो उसमें टॉर्च होना चाहिए, क्लॉथ होना चाहिए और पेरिशेबल फूड आइटम्स मीन्स द फूड विच कैन बी यूज फॉर ए लॉन्गर पीरियड, लाइक ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स को आप कभी भी 2 महीने में कभी भी खा सकते हैं, आप पैकेट में रखें. बी अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ डिजास्टर योर एरिया इज प्रोन टू. सो व्हाट नाउ पुणे we are getting moderate rainfall, but those who are living near the river, they should be very very alert. When there is a heavy rain, they should be very very alert. kabhi bhi flood aa sakta hai. So those who are living the river area in our area, or especially those who are living on the high rise building or near the mountain, they should be aware of the landslide. Sir, there is a society called Songbirds. It is in mountains and it has Ram Nadi beside it. Yes, I know. When a disaster strike, pick up your emergency bag, switch off all the electric points and move out of the house as soon as possible, as there is a alarming. जब भी ऐसी 2019 में जुलाई 19 या अगस्त में, हाँ ये 27 जुलाई और 7 अगस्त के आसपास बहुत फ्लड आया था यहाँ पे. सांगली के लोगों को पता होगा, आउंध के लोगों को पता होगा और उधर पिंपरी चिंचवड़ के लोगों को पता होगा कि पुलिस कम एंड अनाउंस इट. दोज हु आर रिसाइडिंग नियर द रिवर, लीव द हाउस, क्लोज द हाउस एंड गो अवे. और वो बताते. सो यू हैव टू बी अलर्ट. अवॉइड यूजिंग एलिवेटर्स. जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसे हमारे यहाँ पे एलिवेटर्स नहीं, लेकिन आप मॉल्स में जाते हैं, जो मूवमेंट करने वाले जो स्टेप्स होते हैं उसको आप अवॉइड कर सकते. इनकरेज पीपल टू फेस द सिचुएशन ब्रेवली. ऐसे नहीं कि लोगों को डराना है, उनको बताना है डोंट वरी वी विल हेल्प ईच अदर. हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना है. Encourage people around you to help by cash and in kind. As we discussed in earlier period also, हमें एक दूसरों की मदद करनी है. That we have to learn. You can see the medicines and you can see the collapsed building and you can see army jawan who is taking care of a very young baby, and you can see the doctors are taking care of the patients who are injured. So this way you have to help each and every one. Now here is a cyclone. I am presenting this because you can remember a lot with seeing the picture. If you observe the picture of a cyclone, and mostly the IMD department, that is Indian Meteorology Department, they are always showing on the news channels that is cyclone. Now the heavy rain is predictable in our area. What is cyclone? Cyclones are strong and rotating winds common in coastal areas and are associated with high tides and the flood. Especially the coastal area means near the seashore, samundar ke paas, that is called as coastal area. And that area, there might be a heavy rain and heavy wind, and that may be turned into the high tides and the flood situation. High tides मतलब क्या होता है? The rise of water in the sea. Sea में जब water की level बढ़ जाती है, because of that high tides may come and that cause the area near the seashore. वो पानी सब जमीन पे आ जाता है. You can see the cyclones. Cyclones are strong and rotating wind. घूमता रहता है. But the periphery, that area is in big size. ज़्यादा बड़ा होता है. उसको बोलते हैं cyclone. अब यहाँ पे देखो, what is landslide? आपको दिखाई दे रहा है लैंडस्लाइड? कैन यू सी द लैंडस्लाइड? द रोड्स आर गिवन.
Yes, sir. Yeah, the mountain part, the residue, the stones and the sand is slide on the road and it stop. It's mostly happen. किसी का mic on है, please बंद कर दीजिए. It's happened mostly in the Konkan area, mostly in Sindhudurga, Ratnagiri, Goa, and this year near Chalisgaon. सृष्टि पाटिल को पता होगा, औरंगाबाद से चालीसगांव जाते समय वहां पे लैंडस्लाइड हुआ था बारिश के दिनों में. अभी भी बंद था और लास्ट अभी 15 दिन तक अभी भी वहां से व्हीकल्स नहीं आती है क्योंकि वहां पे पूरा रोड डैमेज हो गया. लैंडस्लाइड आर कॉमन इन हिली रीजन. They occur when slippery masses of rock, earth and debris slide down the mountain slope due to the heavy rainfall on or the earthquake. ऐसा नहीं कि rainfall से होता है, earthquake से भी जब mountain हिल जाता है, some debris and stones fall down on the road and all the traffic is jammed. ऐसे समय ट्रैफिक. मैं बोलना बंद कर देता हूँ. किसका माइक ऑन है? साक्षी बारगे, माइक ऑफ करो बेटा. गलती से ऑन हो जाता है तो उनको समझ में आना चाहिए, तुरंत बंद कर देना चाहिए. गलती से ऑन हो सकता है ना. Yes. Now the next situation, you are already viewing this in these days. आपने कल भी न्यूज देखा होगा what is happening in Kerala and Chennai. Just 2 months back, it's happened in Mumbai, Ratnagiri, Raigad, Solapur, Kolhapur, and even in Marathwada, Aurangabad, Jalna, Parbhani, Beed, Usmanabad. These are the local places, and Bihar and Uttar Pradesh also. This is called as the flood picture. You can see the pictures, you can see the villages and roads, everywhere water. What is flood? And due to heavy rain, rivers become spread out on the land around them. In nature is called flood. So excess water, the excess water from the river goes to the residential area, and everywhere water is accumulated. Everywhere water is there. And that situation is called as the flood situation. आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर से, क्योंकि आप पिक्चर से बहुत अच्छे से याद रखेंगे. Then what is tsunami? अभी देखो ये tsunami की स्पेलिंग T से शुरू हो जाती है, और आपने पिक्चर में भी देखा होगा, और ऐसे सीरियल्स में भी दिखाते हैं, फिल्म में भी इसके ऊपर सुनामी के ऊपर का फिल्म भी बनी है, आप देख सकते हैं. What is tsunami? A tsunami is an enormous wall of water that comes on the shore in the form of waves. जो वाटर की वेव्स होती है, it's come very fast on the earth surface, and tsunami occurs due to the undersea earthquake or volcanic eruption. ये tsunami क्यों आता है? Because the water in the sea or below the water, that there may be an earthquake or there may be a volcanic eruption in the water. Because of that, the water is moved from that place randomly and a high pressure. ऐसे ही इतने प्रेशर से पानी जमीन पे आ जाता है, and it's happened in India on 26 December 2004. If I remember, if I am not wrong, it's happened in 2004. That is on 26 December. आप नोट कर देना, और आपको ये पता होना चाहिए. Tsunami came in India that time, especially near the Chennai and Chennai area. Even that water entered in the stadium also. That Chinnaswamy Stadium is there, और उस स्टेडियम में भी ये पानी चला गया था सुनामी का. अब यहाँ पे आता है what is drought. This situation mostly happened in Marathwada, Vidarbha, Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Andhra Pradesh. इस एरिया में ड्रॉट्स, बेटा हम बात करेंगे, पहले मुझे बोलने दो. व्हाट इज ड्रॉट? तो ये ड्रॉट्स वहां पे दिखाई देता है. इफ ए पर्टिकुलर एरिया रिसीव्स नो रेन, बट सिंस लास्ट 2 years वी आर गेटिंग एक्सेस रेन. लास्ट 2 साल से हमको ज्यादा बारिश मिल रही है, वी आर गेटिंग मोर रेन. बट 2-3 years back, 2016 and 17, that time so many areas received less rain, and that less rain
than the normal for a longer period, it is said to be affected by the droughts. You can see everywhere plants are dried, the dams are dried, and big lines on the land, cracks are there, and due to the drought, water sources dry up and no crop can survive. People die of famine. क्या हो जाते, भूखमारी के शिकार हो जाते, पानी तक पीने को नहीं मिलता है. You can see that man is shouting, is inviting the clouds to come. Clouds को बुला रहा है, बारिश को बुला रहा है, बारिश आ जाओ. And because of that, people affected a lot. Now you can see describe the volcanic eruption. If you can see the volcanic eruption, especially near the mountain area or any place that the lava is coming out from the earth crust, it is in brownish or orange color. As soon as it's come out, a lot of smoke is coming out. Sometimes it's turned into the rock. वो जब भी बाहर आता है उसका rock में turn out हो जाता है. A volcano is a hill with a vent. You can see on the hilly area the small hole is there. From that hole that volcano is coming out. The vent reaches down to the hot molten rock beneath the surface of the earth. During a volcanic eruption, the molten rock is forced up the vent. It flows out of the top as lava. As I said, the lava, liquid, brown or orange color liquid is coming out. The lava flows out very fast and burn everything that comes in its way. जैसे ही वो लावा बाहर आ जाता है और स्प्रेड हो जाता है 100 किलोमीटर तक, जो भी उसके कांटेक्ट में आता है, इट इज वेरी हॉट, इट ड्राइड, इट बर्न, इट कॉजेज ग्रेट डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड द लाइफ. इट्स हैपन स्पेशली इन द माउंटेनियरिंग एरिया. वहाँ पे फॉरेस्ट फायर स्टार्ट हो जाता है, एनिमल्स भी डाई हो जाते हैं. So this is volcano is very dangerous. That is volcanic eruption. जमीन से अंदर से लावा आ जाता है. The next one is how is the intensity of an earthquake measured? हमारे धरती पर जब earthquake होता है, we can measure it. कितना बड़ा earthquake था? How much? Whether it is a normal or a severe. So it is measured on these types of the machines which I have shown you, and the intensity of an earthquake is measured on Richter scale using the seismograph. इसको Richter scale पे measure किया जाता है, and name of the machine is the seismographs. ये आपको मैंने दिखाया. One more time. So what is seismograph? Seismograph is a machine which measures the intensity of an earthquake. सिस्मोग्राफ एक ऐसी मशीन है जो अर्थक्वेक कितना आ गया वो मेजर करके बता देती है, जिससे हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक के प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, वेदर इट इज अ डेंजरस और ए नॉर्मल. That's why, as I always say, please watch Discovery Channel. They will show you so many things in a detail. Now here is the earth crust. Draw and label the क्रॉस सेक्शन ऑफ एन अर्थ. आपको ये अर्थ है, ये धरती है, भू है, इसके अंदर क्या क्या रहता है इसका क्रॉस सेक्शन मैंने अभी पहले भी एक्सप्लेन किया. आपको इसको ड्राइंग करना और उसके पार्ट को याद रखना जरूरी है. ये मैं क्वेश्चन पेपर में पूछने वाला हूँ. द आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज क्रस्ट, इनर पार्ट इज कॉल्ड एज द मैंटल, and in between there is the molten cluster core and solid inner core. Now next one is what is seismograph. आपको ग्राफ पढ़ा होगा आपने मैथ्स में. तो ये जो seismograph है ये मशीन से ऑटोमेटिकली लाइन खींचता है. तो आपको पता चलेगा earthquake generate waves that travel all over the earth. जैसे ही कहीं पे earthquake होता है, फॉर एग्जाम्पल गुजरात में हुआ, वहां से वेव्स हमारे तक आते हैं. उस वेव्स को नापने के लिए अर्थक्वेक क्या करते हैं, उसमें सिस्मोग्राफ, उसको ग्राफ बनाते हैं उसकी इंटेंसिटी को पता करने के लिए. दिस कैन बी डिटेक्टेड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ. ये भी सिस्मोग्राफ का ही एक पार्ट है. ये किसने निकाला?
हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, ये किसने निकाला? हु आर द सिस्मोलॉजिस्ट? ये सिस्मोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं? द पीपल हु स्टडी द अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। जो अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं, दैट पीपल आर कॉल्ड एज सिस्मोलॉजिस्ट। और पहले सिस्मोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट मैलेट, जिन्होंने 1810 से लेकर 1881 तक जो रिसर्च किया, इसीलिए उनको द फादर ऑफ सिस्मोलॉजी कहा जाता है। This is about the today's class. Thank you and have a nice day. Let me stop my presentation and just few more minutes. Let me show you now here. मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, क्वेश्चंस में शो कर रहा हूँ। आई थिंक प्रेजेंटेशन बंद हो गया क्या? Yes, sir. मेरे को दिखाई नहीं दे रहे आप, इसीलिए। ओके, just 1 minute, just 1 minute. Yes, now this is about the today's chapters. हमको write about the various do's and don't regarding the earthquake, to list the people who came to help at the time of disaster. में कौन कौन मदद करता है? डॉक्टर, NGO, आर्मी पीपल. To tell the phone numbers and address places to be contacted at the time of emergency और accident के लिए आपको एम्बुलेंस का नंबर पता होना चाहिए। आपके घर के आसपास के जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनका नंबर याद होना चाहिए आपको। पुलिस स्टेशन का नंबर याद होना चाहिए। तो ये वर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, आप लिखेंगे। देन फिर मैंने क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। What are natural disaster? Give some example. What is earthquake? What should do when the earthquake is there? 2 points relief measures क्या कर सकते हैं? ये आपको define the following. Flood किसे कहते हैं? Drought किसे कहते हैं? Famine किसे कहते हैं? Okay. फिर उसे flood leads करने से क्या diseases हो सकते हैं? उसके बाद में मैंने fill in the blanks दिए हैं और एक्सप्लेन द टर्म। फ्लड किसे कहते हैं, साइक्लोन किसे कहते हैं, फैमिन किसे कहते हैं, डिजास्टर किसे कहते हैं, और इसकी सारी लिंक मैंने आपको दे दी है। एक मैंने ये वर्कशीट भी दी है, आपको दिखाई दे रही है। अभी भुज का जो क्वेश्चन दिया है, आप इसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में मैंने एक्टिविटी शीट दी है, आपको ये पढ़ना है। इट इज जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कैलामिटी एंड सम क्वेश्चंस आर फ्रेम ऑन इट। और आपके जो भी नेचुरल कैलामिटीज है उसकी स्पेलिंग आपको उल्टे पुल्टे दिए, उसको आप सीधा कर सकते हैं। आप मैचिंग कर सकते हैं, अर्थक्वेक मतलब क्या होता है और इसका मतलब और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, इसके आंसर मैंने सामने दिए हैं। उसके बाद में ये अभी जो क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने रीड करके आपको एक्सप्लेन किए, ये भी मैंने आपको दिए हैं। मर्जी आपकी है, आप कितना पढ़ते हो, आप कितना समझते हो, ये आपके हाथ में है। और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी इस मंथ की। डियर स्टूडेंट, टुडे यू विल कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट 5 कैलामिटीज। आपको 5 कैलामिटी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, और जो लेटेस्ट होगी तो बहुत अच्छा। और नेचुरल, मैनमेड और फोटो इमेजेस आर कंपलसरी। एक तो भी फोटो आपको चिपकाना है। इंफॉर्मेशन शुड कंटेन नेम ऑफ अ कैलामिटी, प्लेस, डेट, ईयर, फोटो, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। अब 2 बच्चों ने किया ये काम। लेट मी शो यू। मुझे तो सिर्फ स्वस्तिक समानता का दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आपको उसी का दिखा देता हूँ। मैंने सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी दी है और आप लोग इसे अच्छे से करेंगे। 2 दिन का टाइमिंग है। देखो इसमें इंफॉर्मेशन अबाउट द 5 कैलामिटीज, इसमें लिखा है अर्थक्वेक के बारे में लिखा है। उसके बाद में इसमें गुजरात मैग्नीट्यूड के बारे में लिखा है, इंटरनेट से लिखा है उसने सब कुछ, ये देखा। और अर्थक्वेक, भूकंप, भूचाल दिखाई दे रहा है क्या आपको? यस इसमें एक ही लिखा है। अब एक लिखा, मैंने 5 बोला था तो आपके सामने मैंने इसको 2 मार्क्स दे दिया और इसको मैं वापस करा। सिर्फ अर्थक्वेक के बारे में लिखा है, आपके सामने मैंने चेक कर दिया और उसको वापस भेज दिया। तो आपको ऐसे 5 चीजें, इसमें बहुत सारे पिक्चर्स कलेक्ट करना है, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये मैंने सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी आपको दिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में। सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी जो है आपको पता होनी ही चाहिए, मैं थोड़ी पता कराऊंगा इसको।
और लैट नंबर 12 और 13 मैंने दिया था, और ये सफल भी दिया था। कितने बच्चों ने किया आपको पता होगा, बाकी तो मर्जी आपकी है, आपको कितना लिखना है और क्या लिखना है। ठीक है, थैंक यू डियर चिल्ड्रन। वन मोर टाइम, व्हाट यू